तो आई थिंक धुरंधर 3 में अब हम सर को फिर से देखेंगे। व्हाट इज अ होटेलियर? होटेलियर इज एन एक्टर। अब सेलिब्रिटीज तो बहुत आए हैं, आई कैन नेम मेनी ऑफ देम। एक स्टार था जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट में ही रहता था। अब हुआ क्या कि वो हमेशा बुक कर लेते थे एडवांस में, लेकिन इस टाइम उसका सडन प्लान बन गया और हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को उसको डाउनग्रेड करना पड़ा। सिचुएशन ये आ गई कि एक ही हॉल को दो आदमी ने एक ही डेट पे बेच दिया अलग अलग। तो मैं जो शादी वाले थे उनके घर भी पहुंच गया, वो नहीं मिले, देखेंगे। और ये सारा मैंने मैनेजर्स एचओडीज के सामने करा। क्यों सामने किया? कि सबको पता चलना चाहिए कि किस डिफिकल्टी से मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। इसमें एक टैक्ट होता है। टेबल्स फ्रिलिंग होती थी, कपड़े की सेटिंग की, वो मेरे को नहीं आता, नेवर डन इट। तो रात को जब स्टूअर्ड्स चले आते थे ना, सब चले जाते थे, मैं उसको टेबल को खोल देता था पूरा और फिर उसको वापस करता था। मीटिंग मैनेजमेंट शुड बी वेरी पार्टिसिपेटिव एंड पीपल शुड कम अलोंग विद यू। सर हमारे होटेलियर्स कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो बार बार करते रहते हैं? जैसे कर्टन खुलेगा, यू हैव टू प्ले दैट पार्ट, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। योर पर्सनल इश्यूज विल बी देयर, एवरीबॉडी हैज, कीप इट बिहाइंड, everything else goes behind that. Every day each one of you will get one chance to create a wow for a customer. I imagine there are 200 people working in the front of the house. You got 200 opportunities, you got to look for them. जुगाड़ और एसओपी। Jugaad. Welcome back to Beyond the Lobby, the podcast where we pull back the velvet curtain on the luxury hospitality. I am Shweta. And I am Gaurav. And today in Suite 008, we have a very special guest checking in. Imagine he's spending over 4 decades in the hospitality industry, starting at as a chef at 23 and becoming a general manager of the most iconic hotel of the world. He trained chefs at 23 and he navigated during the pandemic as a general manager of the Imperial Hotel. He's been called Hotelier of the Year, a veteran and a celebrity chef. But most of the people in the hospitality sector call him a legend. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Vijay Vanchu. Welcome to the show, sir. Thank you. So, Vijayji, you were a trainee at 21 and then general manager at 45. What decision changed that level where, the entire trajectory in your career had progressed? Well, I joined kitchen training program, and that too because I had no other choice. Didn't want to be a chef, became a chef. And during my training period for 2 years, we had one interaction with the deputy chairman, Mr. Oberoi, at the Oberoi Hotels. Mr. Bicky Oberoi, as we all know him. And he kind of identified me as one of the boys to, look after during the next few years. And I stood out of the batch in a way. And he called me to his office. Now, that was something big for me at a very young age of 22, 23. Not even a demi chef that time. I was just a trainee. And he says, "What can I do for you?" I don't know what happened. I told him, "Sir, I want to go abroad for training." It was sudden, it just came out. I said, let me say it. What's the harm? Nahi hoga to nahi hoga. All right. And he sent me to Westminster College, London. That was a good turning point. Came back, and I was an instructor at the Oberoi School, where he called me again and said, "Mr. Vanchu is telling me, addressing me as Mr. Vanchu." I felt like, this is great. He says, "I can see you as a food and beverage manager with us." And that line stayed with me. Interestingly, I became an F&B manager, but not with the Oberoi Hotels, outside. But somewhere you don't have your own confidence, but somebody does something or says something, and that to the level of a person like Mr. Oberoi. I think that really kind of got me thinking, okay, I'm a chef, but why not move out? And that's how slowly my thought process changed. Wonderful, sir. सर स्पाइस रूट का जो इंटीरियर है इज वर्ल्ड रिनोन एंड आई थिंक यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम ऑल्सो उस आई मीन सबको पता है स्पाइस रूट का खाना कितना अच्छा है, इंटीरियर कितना अच्छा है, बट वो स्टोरी बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली में क्या हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल, स्पाइस रूट एक प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने इंपीरियल ज्वाइन किया था 96 में, तो माय फर्स्ट जॉब
वो गिवन टू मी वाज कि आपने स्पाइस रोड खोलना है। एंड रियलिटी ये है कि मैंने ज़िंदगी में साउथ ईस्ट एशियन रेस्टोरेंट नहीं खोला था। आई बीन पार्ट एज अ सेकंड इन कमांड बट नॉट एज अ बॉस, एंड दैट टू एज द ईएम ऑफ द होटल, सेकंड इन कमांड वहाँ भी था मैं, बट सीनियर लेवल। सो आई वेंट टू दी ओनर। उन्होंने मेरे को काफ़ी बताया कि क्या प्लान है and, किस टाइप का कुजीन है और डिज़ाइन क्या है। एंड इससे आप जाके राजीव सेठी को मिलो, ही इज़ द डिज़ाइनर, तो वो आपको समझा देंगे सारा। बट आपका अगले 1 साल के लिए यही फोकस है और कुछ नहीं करना। Imperial was changing its perception also, the positioning I would say is coming up. I went to Rajiv Sethi. He says, Vijay, I don't have any drawings. I can't show you any layout. I said, what do you mean? That's what I've come for. No, it's all here. Yeah, okay, it's all here. But so he explained to me, he took me to the restaurant. It was a room with black walls and nothing. He said, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये artifacts आएंगे. And I'm trying to kind of visualize. So the design which came out finally, it's world class. I mean, I would say it's a temple, converted into a restaurant. The art is such organic, Kerala artists coming from the temples, Gurvayu temples, who would actually paint. So that the whole restaurant is it's a top 10 in the world. So yes, as a design and as a concept, बहुत ही बढ़िया. I've never seen anything in my life. 7 साल लगे उसको फाइनली बनने में. जहाँ तक ऑलमोस्ट रुकने का सवाल है, पॉसिबली ये होता, बट द ओनर्स वर वेरी क्लियर दैट हमने खोलना है चाहे कुछ भी हो जाए. सो फाइनली आई थिंक things worked out. I traveled a lot to Thailand, went across, and completely, combed the entire country for food, the cuisine, the culture, the crockery, cutlery. Even we got staff from there. You know, we even brought in staff from Thailand, and it took me about a year and a half to actually get to the stage of opening it. And then after we opened it, 6 महीने थोड़ा सा tough time था, but it was a super success after that. आई थिंक अब ओनर्स के अलावा कोई स्पाइस रूट के बारे में जानता है तो मिस्टर वांचू है. सर 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन होटल्स एंड आपने रॉयल्टीज से लेके सेलिब्रिटीज सबको होस्ट किया है. कभी एक ऐसा चैलेंजिंग टाइम आया कि आपके अलावा उस काम को कोई नहीं कर सकता था और उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता पाएंगे? देखो ऐसा होता है, आप ही होटल्स में काम करा हुआ है, कोई जीएम नहीं कह सकता कि मेरे टेन्योर में कोई कंप्लेंट नहीं हुई हो. एग्जैक्टली. तो एक होता है कंप्लेंट होना, एक होता है एक सिचुएशन है उसको हैंडल करना. हो गया है, क्यों हो गया वो बाद में देखो, वो उसका एनालिसिस करो बाद में. बट फिलहाल इसको आपने सॉल्व करना है, गेस्ट को खुश करना है और उसको जाने नहीं देना है. अब सेलिब्रिटीज तो बहुत आए, आई कैन नेम मेनी ऑफ देम. एक स्टार था जो हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट में ही रहता था. अब हुआ क्या कि वो हमेशा बुक कर लेते थे एडवांस में, लेकिन इस टाइम उसका सडन प्लान बन गया और हमारे पास अवेलेबल नहीं था. तो मेरे को उसको डाउनग्रेड करना पड़ा लग्जरी स्वीट में. और ही वॉज वेरी अपसेट. इसे फिर मैं आऊँगा ही नहीं यहाँ पे. मेरे को उसने फ़ोन करके बोला नहीं दे सकते तो मैं नहीं आता. बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया. एक और स्टार की हेल्प ली मैंने कि इसको समझाओ, तो वो समझा और आया. उसके बाद चला गया. वो नहीं आया 6-8 महीने के लिए, जबकि वो साल में एटलीस्ट 10 बार ही आता था. देन आई काइंड ऑफ टॉक टू सेक्रेटरी को फ़ोन किया. मैंने कहा यार देखो गलती हो गई. गलती क्या है, नहीं था. उसके बाद वो वापस आना शुरू हुआ. और एक रिकॉर्ड है, जब भी वो आता था चाहे संडे के 8:30 बजे होता, मैं उसको रिसीव करता था. ये मैंने ट्रेंड बना लिया था. तो जब वो मैं निकल गया वहाँ से, छोड़ा मैंने, तो मैंने उसको मैसेज डाला कि अब सब कुछ ठीक है. तो कहता है हाँ यार सब कुछ ठीक है बट आई एम मिसिंग यू. सो दैट वाज अ बिग फॉर मी, इवन आफ्टर लीविंग. एग्जैक्टली. सिमिलरली एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपके पास बैंक्वेटिंग बहुत बिजी चल रहा है, शादियां हैं. तो एक सिचुएशन ये आ गई कि एक ही हॉल को दो आदमी ने एक ही डेट पे बेच दिया अलग अलग, बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन. एक था बहुत बड़ा न्यूज़पेपर फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिल्ली, और एक था इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ओ माय गॉड. टॉप.
ओके. अब वो कोई नहीं हैंडल कर सकता था और मैं भी नहीं कर सकता था. आई सेड अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता. तो आई कॉल्ड बोथ द गाइस कि हुआ क्या बताओ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ. आई सेड तो गो एंड टॉक टू योर पीपल हु यू आर डीलिंग विद. सर हमने बात कर ली, कोई नहीं मान रहा. तो मैंने कैसे करोगे यार, एक शादी है और एक कॉन्फ्रेंस है. हाँ. ये बड़ी लंबी कहानी चली. तो एटलीस्ट दे टोल्ड मी अबाउट अ वीक बिफोर. अब इमेजिन एक हफ्ते में क्या जादू कर लेगा आदमी. तो मैं जो शादी वाले थे उनके घर भी पहुंच गया. अच्छा. वो नहीं मिले, बिजी. वापस आया, कंपनी वाले से बात करी कि सर आपको वेन्यू दे देते हैं दूसरा, बट वेन्यू हमारे पास था नहीं. था लेकिन वो रेस्टोरेंट था, उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा था. तो मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया. कहता है होगा नहीं, आप बना के देख लो, सेटअप दिखा दो, देखेंगे. और ये सारा मैंने मैनेजर्स एचओडीज के सामने करा. क्यों सामने किया? कि सबको पता चलना चाहिए कि किस डिफिकल्टी से मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ. तो पूरा स्पीकर पे रखा फ़ोन बीच में और बात किया. शाम को इवनिंग मीटिंग में उसके अगले दिन सुबह में सेटअप करा. सेटअप करके उनके भी आदमी आए, उन्होंने फ़ोटोज़ देखे, उनको भेज दिया. तो शाम की इवनिंग मीटिंग में फिर फ़ोन किया तो कहता है अच्छा लग रहा है बट मुश्किल है. I said, my God यार इतनी मेहनत करी. And I haven't didn't sleep for 3 nights, I'm telling you. Because it was my neck on the block. Forget what happens to people below. Anyhow, अगले इवनिंग मीटिंग में 2 दिन पहले, इवेंट के पहले, somehow I don't know, I was, see इसमें टैक्ट होता है. You have to say we have goofed up. I said I have goofed up. Forget my team, I made a mistake. कहता अच्छा क्या करोगे आप हमारे लिए? You know how they are also smart. I said don't worry sir, आप you do your event, I will do something for you. Finally they did the conference in a restaurant which was converted into a banquet space, and I did not charge them for that day, for that lunch. Okay. Because for me that cost would be Yes. 50,000 rupees. Sure. But this is how I kind of handled it, and there are many more. Yeah. I can count about so many incidents where I've probably brought in a little late, but I've उसमें क्या होता है 9 on 10 I can handle. Yeah. एक होता है जिसको आप नहीं कर पाते हो. Yes, only one I can say I never was able to handle. Well, I had to refund the entire stay because there was a major problem with some issues. तो ये celebrities हो या corporate हो, the guest is king, you know, he's paying you. Exactly. And you have to ensure that he's happy. Yeah. And my policy is that the guest should not leave the door unhappy. Whatever happens, usko jaane ke time, usko he should be comfortable that yes, people did look after me. Vijay ji, when you have been into this leadership और उतने decades से आपका ही leadership का आप रहे हैं, so what do you feel कि जब हम एक leader होते हैं तो हमेशा एक नई चीज आती है हमारे पास, और नई चीज कई बार ऐसी होती है जो हमने कभी पहले नहीं करी. तो हाउ डू यू मैनेज दैट न्यू थिंग एट योर लेवल? क्या आप अपने जूनियर स्टाफ को ऐसा लगता है कि भाई ट्रांसफर कर दो, ठीक है, मेरे लिए तो ये नहीं है. सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दैट थिंग व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ? अब उन दिनों में जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, टेबल्स फ्रिलिंग होती थी, यू नो, कपड़े की सैटिन की, वो मेरे को नहीं आता था. नेवर डन इट. तो रात को जब स्टूअर्ड्स चले आते थे ना, सब चले जाते थे, मैं उसको टेबल को खोल देता था पूरा और फिर उसको वापस करता था प्लीटिंग. नाउ पीपल यूज्ड टू से क्या कर रहे हैं? मैं डोंट वरी यार, आई एम हियर फॉर सम टाइम. तो बाय डूइंग इट इज व्हाट यू लर्न. दैट्स एट अ डिफरेंट लेवल. अगेन एज अ जनरल मैनेजर और अ वाइस प्रेसिडेंट, द चैलेंजेस आर डिफरेंट. नाउ जनरल मैनेजर्स जो बनते हैं नॉर्मली, दे कम फ्रॉम फ्रंट ऑफिस और सेल्स और एफ&बी. किचन से बड़े कम आए. जी. वन ऑफ देम इज मी. अब किचन में ज़्यादा फोकस किया, एफ&बी में ज़्यादा फोकस किया, फ्रंट ऑफिस में नहीं किया. सो आई नो दैट I know that I don't know something. Naturally, you know, I mean, it's not easy to learn everything. So you have to learn those things, and you have to not to show people के यार मेरे को ये नहीं पता, इनको पता नहीं चलना चाहिए. होता है कितनी बारी मीटिंग में कोई पॉइंट डिस्कस हो रहा है, मेरे लिए नई टर्म है, तो वो you have to learn. Yeah. And learn from everyone. Revenue management is such a big area. As a chef, you've never done it, but yes, we learned it. And learning in such a way without letting people know that you're learning, Exactly. you know, because you can be embarrassed if you give the wrong answer. Yeah. So वहाँ पे अच्छा होता है कि आप चुप हो जाओ अगर कुछ पता नहीं है तो. Exactly. So I think leadership
is all about man management, people management. It is not that I am the boss, I am the horse. I'm sorry, I am the boss and you're the horse. I'm going to ride. Yeah. That it should never be like this. Management should be very participative, and people should come along with you. So I think that is very important. सर एक सवाल मेरे मन में बहुत टाइम से था। एक्चुअली मैं आपसे तब पूछना चाहता था जब मैं आपको रिपोर्ट करता था और आप मेरे बॉस थे, बट उतनी हिम्मत नहीं हुई उस टाइम पूछने की। सो मैं आज ही पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चलता है आपके सामने बैठा बंदा काम का है या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, मैंने एज अ जनरल मैनेजर कितने 500,000 इंटरव्यूज करे होंगे, और बड़ा मुश्किल होता है वो 15 मिनट के अंदर के आप सारी चीज़ें आप संभाल लो। सी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, वो तो आपको इजीली मिल जाता है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बेसिक नॉलेज, आप क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछता था मैं हमेशा, ऑलवेज वेरी बेसिक। तो उसका भी पता चल जाएगा, 10 में से 8 कर दिए सही, नहीं करे। सबसे बड़ी जो क्वालिटी चाहिए मेरे को, एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। वो नहीं पता चल सकता, आइडिया हो सकता है कुछ हद तक। आई हैव अ नैक ऑफ कैचिंग एनर्जीज, यू नो। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, दो लोग का एक एक काइंड ऑफ मैच हो जाता है, अब लगता है कंफर्ट लेवल है। देन आई ऑल्सो लुक एट द पर्सन's आईज, हाउ इज ही, कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, इज ही स्माइलिंग, नॉट स्माइलिंग। ये दो तीन चीजें होती हैं जिससे आप वो करते हो। और I think 9 on 10 I've been successful in picking up the right people. But एक दो होते हैं जो definitely later on you realize यार ये तो गलती हो गई। सर हमारे होटेलियर्स कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो बार बार करते रहते हैं एंड दे रिपीट इट अगेन एंड अगेन, एंड व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? See, mistakes का जहाँ तक सवाल है, अगर मैं अपना ही करियर देखता हूँ, तो कभी क्या होता है, you take a wrong decision to take a particular assignment. You taken that job. That's fine, वो गलती होती है, मैंने करी एक बारी और मैंने सीखा उससे, करेक्ट किया उसको। बट आजकल जो है ना, दो चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ यंग जनरेशन को। एक तो बेसिक्स की तरफ वो ध्यान नहीं देते। यू नो, क्या है कि हाउ मेनी यंग किड्स टुडे आर रीडिंग बुक्स? क्या है, चैट जीपीटी है, गूगल है, सब कुछ मिल जाता है। एग्जैक्टली। बट मेरे पास अभी भी बुक्स पढ़ी हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। बट टुडेज जनरेशन डज नॉट रीड बुक्स, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड। कॉलेज में पढ़ लिया आपने, थियोरी ऑफ केटरिंग वगैरह आपने कर लिया, बट उसके आगे भी बहुत कुछ है, स्पेशलाइजेशंस हैं। सो एक तो वो है बेसिक्स। The other is I feel they are jumping too fast. Today, 1 year, अगर if somebody stays in an organization, हो गया जी बहुत। Why? 1500-2000 रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे, and they will jump for the money. Third is they leave the industry because there's a burnout, and that's I've seen in my own family. I've seen, people, they lasted for 8-10 years. That's the thing, the burnout. You don't get your own free time in the industry. एग्जैक्टली। I mean, you're working so long. I, as a vice president, used to work 18-16 hours. You've seen me working. रात को पार्टी चल रही है, और पार्टी भी VIP, top end. I'm not going to go home till 12-1 in the night. And then back in the morning, and not 9. I used to come in the morning at 8:30 यस। and stand in the lobby and meet people. So that is something I feel today. In our time, I worked in 44 years in 4 organizations. उसमें भी 2 में 2 बार ही किया, तो 6 ले लो। So if you divide 44 by 6, so 6-7 years in an organization as average, I think that's what people should look at. एग्जैक्ट। सर आपकी हॉस्पिटैलिटी स्किल्स ने आपकी एक्टिंग मॉडलिंग में करियर में कुछ हेल्प करी क्या? Acting, modeling, firstly, you know about that? नहीं, About my part of the acting and modeling? सो मैंने कहीं कहीं पे देखा है और कई बार सुना है, बट एक्चुअल स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूंगा। Okay. इसके लिए I'll take you but about 50 years ago. ओके। When I was in school, there was a movie called Bobby, which was released 1973. So, as a kid, you're looking at Rishi Kapoor and Dimple Kapadia. You swoon over the actor है, hero है. तो उन दिनों मेरे को ना वो
they had a bike in that movie called GTS, some bike. Yes. 3,500 रुपए की थी और मेरे पैसे कहाँ से होते थे 3,500. So I wanted to buy that bike, but वो तो नहीं हो पाया. But I looked at Rishi Kapoor and say, यार ऐसा बनना है. You know, you always have an idol. Yeah. And I had that thing inside कि मेरे को ना कुछ स्क्रीन पे करना है. क्या करना है पता नहीं है because we are too naive. तो तब से शौक था मेरे को मॉडलिंग और एक्टिंग का. और आप मानेंगे I'm 73 की बात कर रहा हूँ and I started doing it in 2010 when I got the opportunity. Yeah. But yes, the question that you're saying about acting, your work helping into acting, what is a hotelier? Hotelier is an actor Exactly. because आप बैक ऑफ द हाउस जाते हैं तो आप इंजीनियर को डांट रहे हैं, हाउसकीपर को डांट रहे हैं, किचन में प्रॉब्लम हो गई, शेफ से लड़ रहे हैं. बाहर आते हैं, हेलो सर, हाउ यू डूइंग, यू नो एवरीथिंग इज ऑल राइट. You suddenly have to change your mood. Exactly. So that's acting. So another story I'll tell you. I heard in the Imperial कि राज कपूर वहाँ ठहरते थे 60s में. Okay. तो वहाँ GM होता था, कोई जर्मन था. तो the general manager met Raj Kapoor in the lobby. He said, Mr. Kapoor, I know you're an actor. I'm a better actor than you are. So Raj Kapoor said, what the hell do you mean? I've won awards. I made such lovely movies. I'm a star. No, sir. You see, 2 minutes back, I was in the kitchen firing my chef and angry at him. And here I'm smiling at you. So I'm equally a good actor or better. Exactly. So that you have to get your mind cleared Yeah. in a situation where you can't carry that in front of the house. You know, you're on the stage, Yeah. curtain is drawn, you're fine, you're behind the curtain. जैसे curtain खुलेगा, आपको, you have to play that part. True. You have to force yourself. Yeah. Your personal issues will be there. Everybody has. Take it, keep it behind. When you are in the hotel and dealing with customer, everything else goes behind. And that's what I keep talking in my sessions of counseling and, you know, classes I take. And even if you remember, I used to welcome every batch every 15, 20 days, 1 month. I used Exactly. to go and talk in the Yeah. induction time. Yeah. And I used to tell everybody one thing, that every day, each one of you will get one chance to create a wow for a customer. I imagine there are 200 people working in the front of the house. Yeah. You got 200 opportunities. You got to look for them. So, you know, that comes only from your passion to do something for a customer. So कुछ जो movies you can recall जहाँ पर you became a part of them. Absolutely. I think, you know, for me, it's these are moments where I've really enjoyed doing something. Like I said, शुरू से मेरे को था कुछ करना है, and वो ब्रेन वॉश हो गया. एज अ चाइल्ड आई वाज ब्रेन वॉश, नहीं नहीं हमारी फैमिली से कौन, कोई नहीं आता है मूवीज में, and all that. But that's destiny also in a way, you know. Yeah. So when I'm talking about 2010, when I started meeting Bollywood people, all right, and I can now start counting how many stars I know and how many, some of them even promise के हाँ कुछ करेंगे, but होता नहीं है. It's not easy to get through stars, you know. So you have to find your way through it, through various audition agencies, etc. तो मेरा एक फ्रेंड मिला, वो ही इज अ प्रोड्यूसर इन बॉम्बे. ही सेड मूवी तो नहीं है, टीवी सीरियल आ रहा है दूरदर्शन पे, एंड it's a very interesting story. It's about Kashmir and Pakistan and India overall. And you're playing the main hero. Damn good, yeah, hero. But I am a Pakistan diplomat coming from Pakistan. So it was called Pashmina Ki Shawl. Okay. And it was shown on Doordarshan. 8 episodes or something it was there. So that I was a little different profile those days. Yeah. I had a mustache. I don't know, you never seen me. I have seen a picture of you. Yes. So I used to have a mustache. तो उन्होंने वो हेयर स्टाइल भी ऐसा करके, मैंने कहा नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग टू बी लुकिंग लाइक अ पठान, leave it normal. So finally they kept me as a normal look. Yeah. And fortunately, you know, in that you need a lot of Urdu. And Rajkumar Santoshi, the director, he told me one day, sir, आपकी उर्दू बहुत साफ है. क्यों साफ है? Because my grandfather was an Urdu poet. And in our Kashmiri homes, we used to talk not Urdu, but mix of Hindi and Urdu. Yeah. Lot of the right pronunciation, I can do it. Yeah. Or even if I don't know, then I'll quickly pick it up and do it. So in that serial, there was a word he told me and I was stuck. Mashriq and Maghrib.
ईस्ट एंड वेस्ट। ओ मैंने कहा यार मतलब क्या, बताओ तो पहले यार। तो he told me this is the word, but आपने सही बोल दिया। No dialogue के टाइम फिर अटक गया मैं। So finally I got it. So that movie was so good, so the series, and I loved doing it, but nothing happened after that. I started doing modeling. I went to an agency, they took a lot of pictures and they started calling me for shoots. तो 20-25 ads आए होंगे मेरे in various publications and Yeah. things. Then after that, there was a director from Bombay. He came and stayed with us. He had met another director friend of mine who had told this guy कि उसको मिल लेना, वो बड़ा interested है, तो कोई movie कर रहे हो तो उसको ले लेना थोड़ा छोटे scene में, side hero kind of, side kick. Exactly. तो I was called and Imperial में shooting थी। मैंने कहा भैया Imperial में तो मैं नहीं कर सकता, इसे एक काम करो, आप उधर आ जाओ, मानेसर में शूट हो रहा है। I went to Manesar, took a day off, leave थी मेरी वैसी, And went and took a day off and he says यार एक ही सीन है जहाँ पे तेरे को रख सकता हूँ मैं। यार कर दो यार, डायलॉग है नहीं है, नहीं कोई डायलॉग नहीं है, just smile. This movie was called Fitur with Katrina Kaif. Okay. And the scene is just like this, and she enters from here and I am sitting here. The hero is not hero, the main father, her father is sitting here, and she walks in and looks at me and does adab, and I'm supposed to do adab, and that's it. And so वो एक scene था, बड़ा मेरे को मजा आया। He said, "You look so nice on screen, the way I was wearing a Jodhpuri and all that." yeah. He said, "You suited that." Again, that was a Pakistani diplomat role. So imagine how it happened that twice I'm doing the similar kind of thing. Yeah. And then that was one, but nothing else in that movie. Then there was a movie called Guilty. Okay. Guilty was about this Me Too thing which happened in Yes. Bombay, Yes, right? yes. And so I was playing a lawyer, again, a senior lawyer in that movie. Dalip Tahil is the actor, the main guy. And very interestingly, I went to Bombay. Again, I was on leave. We had leave, so I said, comfortably karo apne time pe. Exactly. And suddenly behind me is an actress walking in. I didn't know who she was. And Aage Dilip is saying, Vijay, meet her, so and so. I said, hello, and I forgot about. I called my wife, say, who's this actress? Kiara Advani. So she must be wondering, yaar, isne pehchana hi nahi mujhe. I didn't recognize her. So that was a movie. I played one dialogue and couple of scenes where I'm walking around, and so that was very interesting Yeah. because you're with big stars. And the last one I've done was Sector 36, which is on Netflix. It's that movie about the Nithari murder case. Yes. So here I'm playing a politician again, but it's a corrupt politician. So I say I don't look like a corrupt politician. He said, don't worry, movie is a movie. You have to do it if you want. And that was one scene which there were two scenes. One was a party scene, the other was a solo 1 minute dialogue. Now, again, I'm the only person on camera with 35, 40 people watching. It was a crazy experience, and it's a long dialogue. And actually, I forgot in between. So he said, "Don't worry, we can do it later also." I said, "No, give me 5 minutes." So I finally did it. Come out pretty good. It's on Netflix. You must watch the Yeah. movie. And so these are the movies which I've done. Okay. And yeah, it's been a great experience. But I think अब next सर को आने वाला है अगर सिद्धार्थ द डायरेक्टर ऑफ धुरंधर सीज तो क्योंकि इतने रोल कर लिए हैं डिप्लोमेट के Sure. तो आई थिंक धुरंधर 3 में अब हम सर को फिर से देखें Actually, I want to do that kind of a movie. Yeah. Because again, when you were there, how many movies were shot? Remember? Exactly. Yeah. So, in what is good thing is that I kind of relate to all these people very well. Yeah. So when we talk about Rishi Kapoor, when we spoke about Rishi Kapoor, and this is very interesting. When he came, first time he checked in. So my front office manager then told me कि वो आया मिलना है मेरे को बिल्कुल मिलना है. I went to meet him and within minutes we clicked. उसके बाद he kept on coming regularly and he stayed during a movie shoots also. Neetu Singh, he referred Ranbir, वो रॉकस्टार शूटिंग चल रही है, वो पता नहीं कहाँ गंदे से होटल में ठहरे हुए हैं, उनको शिफ्ट कर दो. तो वो पूरा मैंने उनको शिफ्ट किया अपने यहाँ पे. 80 days they stayed with us. Yeah. One call from Ranbir, from Rishi, and he says एक चीज है, पैसे ले लेना मेरे को, don't trouble me for the money. So now things have changed. The production houses, they pay you in time. Yeah. Earlier it was very bad. Used to run after film industry. Yeah.
सो ऋषि से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और लोग कहते हैं ना कि शुरू में जब ग्लैमर है, वो ग्लैमर हमारे लिए तो नहीं होता है, बट दैट्स द मिसगाइडिंग factor which we faced. Everybody thought glamour. As a steward, as an apprentice, I have served Shatrughan Sinha. जी। बट वो उतनी ही है ना। उसके हम्म। बाद जब मैं अभी इंपीरियल में था, तो वो टाइम पे जो मेरे रिलेशनशिप्स हुए हैं लोगों से, टिल टुडे आई एम इन टच विद देम। Yeah. So much so the book I've written, we can talk about that. People have written the foreword, actors have written. John Abraham has written the foreword for my book. Oh, And there are stars. Anupam Kher, he's like my brother. He's written about me. Sanjeev Kapoor, the chef, has written about me. And inside the book, 4 hoteliers have written about me, my gurus. So it's a very interesting, amalgamation of all my experiences. But talking about Rishi Kapoor again, तो दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई। He had गुस्सा आता था, anger, he was Exactly. मेरे साथ कहता आपको क्या बोलूं यार, आप तुम करो यार, मैं जा रहा हूँ घर। सर आपने एक जो बुक लिखी है चेक इन बाय फेथ और क्या आपके माइंड में आया दैट यू वांट टू राइट दिस बुक तो क्या इसके पीछे का क्या है बिहाइंड द स्टोरी एंड जैसा आपने डिस्कस किया कि बहुत सारी बियॉन्ड द लॉबी वाली चीजें आपने इसमें लिखी है जी जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए देखिए, किताब लिखना एक मकसद तो था, बट बहुत देर से दिमाग में आया। क्यों? फर्स्टली जब हमने करियर शुरू किया था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 76, इवन बिफोर माय कॉलेज, आई जॉइंड एज एन अप्रेंटिस इन अ होटल। नाउ कमिंग फ्रॉम अ सेंट कोलंबस स्कूल, अब एज एन अप्रेंटिस ट्रे उठानी है, जो फट्टी उठानी, पट्टी बोलते हैं, हाँ जी। पट्टी इज अ टफ ऑफिस। तो वो फट्टी उठाना, आई एम नॉट गोना कैरी अ ट्रे, आई एम सॉरी, बट देन दैट इज रॉन्ग, नो, यू आर सपोज्ड टू। Yeah. तो वो बड़े इंसिडेंट्स लिखे बुक में मैंने कि कैसे मैं भाग गया एक दिन बैंक्वेट हॉल से, बिकॉज गेस्ट मिला, तो गेस्ट मेरा क्लास फेलो गेस्ट था पार्टी में। मैंने कहा इसने मेरे को देख लिया तो एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, ऐसे करके। बट हमें गाइडेंस नहीं मिलती थी। हमारे जो थे कैप्टन्स, थे सीनियर कैप्टन, वो अगेन 20 years इन द इंडस्ट्री, सिर्फ वो लोगों को खींचने के लिए ट्रबल करते थे, कोई सिखाता नहीं था। एक मिला एक आदमी मुझे पूरे करियर में, उस टाइम पे जो कैप्टन था, वो मेरे घर भी आया फादर को मिलने, समझाने के इसके लिए क्या करना चाहिए इस लड़के के साथ। So that is one odd guy. Then later I got 4 of my gurus which I've written about. But क्यों लिखी किताब? क्योंकि I felt that there is no book guiding today young budding hoteliers about the reality of hospitality. So I've written very clearly in the beginning that अगर आपको really deep dive करना है इसमें, तो आप करो, नहीं तो मत पढ़ो। अगर आपको लगता है डाउट है, अगर आपको रियली इंजॉय करना है, और आप 2 साल भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या 3 साल, एंड या आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर, आप 10th 12th में हो, आप होटेलियर बनना चाहते हो, ये उन लोगों के लिए है। एंड डेफिनेटली आई थिंक दोज किड्स विल benefit from the book. It is not a commercial venture where I am trying to make money, because I know I won't even cover the cost. Yeah. But it took me a long time to write it. And if you ask me how long, over 10 years. All right. So now this is the most favorite part of our shows called the Busted Round. And I'll ask you a few questions. You don't have time to think. Oh, You just have to, whatever comes to your mind, you just have to say that. So, are you ready? All right. So, the first question is you'll have to rate yourself out of 10 in the following titles that I ask you. So, the first one would be as a trainee, 6, as a general manager. 7.5, All right. What about actor or a model? 8, What about author? 7.5. And the last one, I will give you some time to think because the next title is husband. Oh my God. I would rate myself very high because, hoteliers are very difficult people to work with. I would rate myself as about 6, 6.5. I think I could have done better. All right. So the next question is one word for hotel guests today. Discerning, Jugaad or SOP? jugaad. One thing that the guests always complain about. That people do not close the loop, they don't get back after a certain request or, complaint maybe. Exactly.
One hotel trend you would like to mention. A hotel trend, I think, where we are heading towards a lot of technology, and I'm a little concerned about that. So one should remain more holistic and organic as far as possible. What's your morning briefing mood? Morning briefing mood. You tell me. You were part of it. No, you see, yes, at times there's a very heavy atmosphere in the morning meeting room because something happened last night and 12 o'clock complaint happened and why did. So, yes, it all depends on the previous day Yeah. or the previous week, maybe. Things have happened and, if it's a great performance, I remember we did 1 crore in one day, 110% occupancy. That's very positive. And but it also depends. My mood is one. It is the people sitting there. And sometimes what happens, they want to fight with each other. They want to get at each other's back. That's you've seen it. Teri galti hai, teri galti hai, teri galti hai. It happens like that. So I have to become the father figure and mediator. And the last question, one thing you would like to ban from the hotels if you could. you know, this is an old profession and you know what I mean. So there's a challenge in terms of certain profile of people, who come in, kind of traffic, which comes in sometimes, where, you can't do anything about. In a day time, somebody is in a room, not registered, you can't do anything about it. But beyond 10 o'clock, you have the right to ask. Exactly. So I think that's something which becomes a challenge for all general managers. Yes. And especially with today's technology, the mobile apps, etc., it's very easy. So that's something where I feel there has to be a control and you can't eradicate it, but you got to be careful because it can lead you into a big problem. Sir, you also have this VW consulting firm. Yeah. So, and that it talks about all, and it does work on shaping of new hotels. How do you see that hotels which will be coming up probably in 2030, how different it would be with the hotels of today? What will change? As far as the physical structure is concerned, it won't change much because hotels will be hotels. I mean, if you just go back to 70 years ago, 60 years ago, the Oberoi opened in 63, 65. Building तो वैसी ही है ना. So renovate करा है अंदर से. Definitely. But yes, technology wise, it is going to go to that level where जैसे airlines started self check-ins. So self check-in is almost there in hotels, right? But I am a little worried about that because यहाँ पे रुक जाना चाहिए हमें as far as technology is concerned. Because where is the personalization going to go? Yeah. Because a hotel will need people presence, training, interaction. Oh, I've seen a robot in somewhere China they made who cooks your food. Everything is ready. You have to cut वो खाना आपके सामने robot ने बना के रखा है. Fine, perfect dish, 10 on 10. Yeah. That's not what we want to get at. Yes, there's another technology I've seen that with the RFID, the guest carrying their card, the room card, and the moment you arrive the reception or the hostess desk, your screen picks up the name of the guest. Yes. So you can straight away say, "Welcome, Mr. Sharma." Right? If that kind of stuff is there, I'm happy with it. Yeah. But not where it means less interaction. You must have worked with the manual keys. Yes. अब जब मैनुअल की लेके जाता था कोई कमरे में तो आपने वापस जब आते थे and you leaving the hotel, you leave the key at the reception. Exactly. Now you don't do that, no? No. You go out with a card in your pocket. Yeah. So 1 or 2 or 3 times less opportunity of interacting with the guest. Yes. Less personalization. True. Today billing, how does the billing happen? QR code. Yes. ओके पहले चेक आता था फिर आप क्रेडिट कार्ड देते थे डेबिट कार्ड देते थे फिर आप साइन करते थे थोड़ा इंटरेक्शन होता था दैट इज गोइंग आउट completely now. Yeah. That is true for any shop also you go. Exactly. So yes, technology should be there as long as it does not balance out your personal interaction. Yeah. But I see a lot of improvement in designs also. Very efficient designs because I think that's where the AI should help creating a perfect design for a back of the house.
right? I find in many hotels I am doing recently, Hmm. it's because as a hospitality consultant, we are doing all sorts of green field projects, and I go into a hotel which is half ready, and I say, my God, यार एक साल पहले बुला लेते हम इसको ठीक कर देते. Imagine there's a uh, kitchen somewhere, there's no proper drainage system. How are you going to operate? Or there's a lobby which is probably so difficult to access, and the systems are all wrong. So that conveyor belt system should be there. Exactly. The way we've always worked. Yeah. And what is another thing lacking in smaller hotels is the absence of a concierge, because bell desk is very important, right? But then to segregate the two concepts, I segregated them. Otherwise, they were all combined, and then the whole concept goes. And there's so much concierge can do. I think he's the heart of the lobby. So I think, yeah, we must keep our selves very clear in mind that yes, That human touch should not. human touch has to stay. Without that, I mean, there are hotels I've stayed in US where I've got 6 staff, 50-room hotel, 6 staff. The coffee shop had a waffle making machine. You put your waffle batter in it, close it, अपने आप वो 5 मिनट में waffle बन जाए. So, or anything as a 5 staff, how much interaction will they do? Yeah. But then that's the difference in Indian hospitality, Asian hospitality, which I think that aspect will never change. Yeah. It can't. Has it changed in the last 100 years? No. Go to the oldest hotel in Calcutta, say the Great Eastern. You know how different it is. Actually, I love to see old movies which show hotels, very, very old stuff. Yes. To really get to know how they operate. Yeah. And the style is still following through, especially in classic hotels. Yes. Thank you so much, Vijayji, to check into your suite 008 today. It was a wonderful conversation we had. कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि you want to tell the hoteliers which are working today in hotel? Firstly, thank you for inviting me over. It's a lovely forum. I think hoteliers जो आज की डेट में whichever level you are, whichever hotel or organization or part of the country you are, never forget that the customer today has choices and they can go anywhere. तो उसको आपने कैसे maintain करना है? What we learned was acquiring a customer is one aspect, maintaining the customer is another, because at a single opportunity he is going to run away. Up, let's take the Aero City for that matter. 10 होटल हैं जो भी है, वहाँ बड़ा competition है आपस में. Exactly. How it started, with Yes. 5,000 ARRs, today they are at 18-20,000 ARRs. But they all know कि थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो he can just walk out and Yeah. go to another property. Similarly in your city and in your comp set, moment a guest goes away. I have had examples who, when certain hotel was under renovation, they came to us and we maintained they're still there. एक चांस मिलना चाहिए आपको कस्टमर. ये कट थ्रोट कंपटीशन है. True. एज अ GM to GM वी वर डैम गुड फ्रेंड्स, बट वो लेवल ठीक है दोस्ती का, हम चाय कॉफी पे मिलते हैं, लंच पे मिलते हैं, डिनर पे. बट जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट है. Everybody wants the best RGI today. Yeah. Everybody wants the best RevPAR. That only come from volumes. Exactly. Yeah, so I think people should be aware that a guest is there with you today. He's not going to be there with you tomorrow if he gets that chance, whether it's a rate or whether it's a personal people to people issue. Yeah. I think mostly it's people to people, where people find it difficult to continue in a particular hotel. Honestly, the kind of wisdom only 43 years of experience in the field can give you. Thank you so much, Vijayji, for coming to be on the lobby. It was an absolute honor for us. Truly. And if you like our episode, please do share and subscribe, and we will see you in Suite 009.